Hello and welcome again. Welcome again to your channel English for Everyone. Today I'm talking about as soon as replaced by no sooner than. First one is as soon as. When you talk about as soon as in the past tense, it means it refers to something that happened in the past time. यानी बीते हुए समय में कुछ काम या कोई घटना हो चुकी थी. फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज ही हैड कॉल्ड मी कॉमा आई अराइव्ड. इस वाक्य में पहले बुलाने का काम हुआ और फिर वो पहुंचा. जो काम पहले हुआ बुलाने का, बुला चुका था, इट मीन्स यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट और उसके बाद सेकेंड पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है. एज सुन एज कैन बी replaced by no sooner than. For example, as soon as she reached the school, comma the bell rang. जैसे वो स्कूल पहुंची घंटी बज गई. Now we will change, we will replace it with no sooner than. No sooner did she reach the school than the bell rang. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नो सूनर हैड शी रीच्ड द स्कूल देन द बेल रैंक.